हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा हटके होने वाला है, येट अनदर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो गाइज, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द टॉप जनरल क्वेश्चंस, जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को एस करने के लिए, बी लाइक एसएससी एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। वो सारे ही ऐसे एग्जाम जो कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे। सो गाइज, जनरल नॉलेज जैसे कि हम सब जानते हैं, इट इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है, आज के समय में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपको एक होता है ना कि नॉट ओनली द क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, बिकॉज आज का टाइम ऐसा हो चुका है दैट सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानना इज नॉट यू नो इनफ। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सो इसमें से एक टॉपिक हो जाता है आपका जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एंड इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वेल प्रिपेयर होना, सो दैट यू कैन यू नो एक एडवांटेज आप कह सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपको उसकी मिल सके। क्योंकि जब आप उसी चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू गिव यू सर्टेन सॉर्ट ऑफ एडवांटेज। ठीक है, तो ये सब तो हो गया जीके से रिलेटेड जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यस, बिफोर वी डाइव इनटू द क्वेश्चंस एंड लुक फॉर ऑल ऑफ दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, लेट मी जस्ट टेल यू कि जनरल नॉलेज एसेंशियल क्यों होता है। सो गाइज, आज के ज़माने में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आसपास की चीज़ें हो गई, ये सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसे करंट इवेंट्स जानना, कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ जानना, हिस्टोरिकल इवेंट्स जानना, ज्योग्राफी हो गया, बाय टेलिंग यू जीके। जीके इटसेल्फ इज समथिंग जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स आ गया। ठीक है, स्टैटिक जीके के नाम पे बहुत सारे कल हिस्टोरिकल चीज़ें आ जाती है जो कि कभी नहीं बदलती। ज्योग्राफी आपका हो गया, जनरल फैक्ट्स हो गया। तो ये सब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नॉट ओनली इट हेल्प्स यू इन द एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो इट कीप्स यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, आपके आसपास क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको पता चलता है इन्हीं जीके के क्वेश्चंस के थ्रू। तो ठीक है गाइज, अब जल्दी से देख लेते हैं। और यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग वंस अगेन रिपीटिंग कि अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। एंड यस, एज आई ऑलवेज टेल यू कि नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, पल पल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी हम हमारे चैनल पर लेकर आते हैं वो सब मिलते रहेंगे। सो यस, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, एक ऐसे इंडियन स्टेट जिसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन का नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है, उसका नाम है गाइस अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच academic institution would you be planning to attend if you were trying to travel from a special platform between platforms 9 and 10 at King's Cross Station, London? ये पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपको याद हो, हॉगवर्ट्स स्कूल का यहाँ पे चीज मेंशन किया गया है, जो कि हैरी पॉटर का जो मूवी था, ठीक है, उसमें गिवन था। तो अगर हम इन प्लेटफॉर्म के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं? सो गाइस, हैरी पॉटर हो गया। हैरी पॉटर का जो हॉगवर्ट्स स्कूल है उसका यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे नाम दे रखा है। और जो ट्रेन है दैट डिपार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 9 3/4, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? सो गाइस, जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, वन इज लॉन्गेस्ट, द अदर वन इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लॉन्गेस्ट रिवर का अगर पूछा गया है तो इट हैज टू बी नाइल रिवर। जो नाइल रिवर है दैट इज ऑफन कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे, तो गाइस सेकेंड नंबर पे आ जाती है अमेजोन रिवर। सो द अमेजोन रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर in the world.
उसकी अगर हम मेजरमेंट्स की बात करें, मेजरिंग 6,400 किलोमीटर्स, तो with that Amazon river becomes the second, and Nile river becomes the first longest river in the whole wide world. Okay, next question. By winning the 2024 elections, Donald Trump became just the second American president to achieve a specific feat, the first being Grover Cleveland in 1893. तो यहाँ पे आपको पूछा ही गया था that which achievement is being referred to here. तो guys यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्लीवलैंड की ऑफ कोर्स। तो जो ऐसे दो यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं जो इलेक्टेड हो चुके हैं टू नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए, तो जो क्लीवलैंड था, Cleveland served from 1885 to 1889, and then उसने 1893 से 1897 को भी सर्व करा था। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट ईयर्स के नेम हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। Okay, next question. What is the currency of the United Kingdom? तो guys UK, which is United Kingdom, की जो currency है that is the British pound sterling. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? तो गाइस ग्रेविटी जो है ये डिस्कवर करी गई थी सर इजाक न्यूटन के द्वारा, जिन्होंने ग्रेविटी को क्रेडिट उनको दिया जाता है ग्रेविटी को डिस्कवर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्टेट दैट इज होम टू द सुंदरबंस? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। Next question, which Persian name for a place where people assembled to play? Now, the name of an equestrian contest is also often used in the names of clubs and institutions in India. So, guys, इसका नाम हो जाएगा Jim Khana from Jamaat Khana. ठीक है? Next question, which 2015 Hindi film based on a Malayalam original focuses on the activities of a family on October 2? So guys, एक मूवी आई थी, सही है, जिसमें मलयालम जो ओरिजिनल मूवी था वो एक मलयालम मूवी था जिसको कॉपी किया गया था हमारे बॉलीवुड के द्वारा। उसमें फोकस किया गया था कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक फैमिली करती है 2 अक्टूबर को। यस आई नो, अब तक आपने गेस लगा ही लिया होगा। यस, दैट मूवी इज दृश्यम, जिसमें 2 अक्टूबर की बात करी गई थी कि 2 अक्टूबर को वो कहाँ जाते हैं, किसके कीर्तन में जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ ट्रैवल करते हैं, कहाँ स्टे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दृश्यम इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Sentinel species are animals used to detect risk to humans by providing advance warning of a danger. Which bird was traditionally used as a sentinel species in coal mines? तो coal mine में भी एक bird को use किया जाता था, uh, इस particular danger से protect करने के लिए. So the canary is the correct answer. Okay, next question. Mohammad Kaif played his first limited overs match for Bengal in 2021 and is now a regular part of their Ranji squad. So, who is more famous elder brother? ये आपसे पूछा जा सकता है. So, guys, Mohammad Shami is the correct answer. Who is known as the milkman of India? This is very important. So, guys, जो Virgisi Korean है is known as the milkman of India. The industrial demand for silver dropped by more than 50% from 1999 to 2019, owing to which change in consumer behavior. So, guys, इसका correct answer होगा change from using film cameras to digital cameras. Next question, which is the largest continent by area? So, guys, largest continent की अगर हम बात करें तो it has to be Asia. Asia is the largest continent, which covers almost about 30% of the Earth's land area. Next question, who wrote the famous book 1984? So guys, 1984 एक famous book है which was written by George Orwell. So George Orwell is the correct answer. Next question, which resort in the Satpuras gets its name from the legend that the Pandava brothers lived in the caves nearby during their 13-year exile? So जो वो रहे थे वो पांच मराही में रहे थे। फ्रॉम पंच से मतलब है यहाँ पे 5 एंड मराही यानी कि केव्स, सो पंच मराही इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? तो गाइस सिटी ऑफ पर्ल्स हम हैदराबाद को बोलते हैं।
Which Nobel laureate was buried in a lead lined coffin in 1934 as the body was still deemed to be highly radioactive. So जो नोबेल लॉरियट थे जिसको बरी करा था लेड लाइंड कॉफी के अंदर कॉफिन के अंदर सो उनका नाम है मैरी क्यूरी और डायरीज की बात करें तो दे आर स्टिल रेडियो एक्टिव. Next question, which graduate of the Sir J. College of Architecture released a hugely successful album against drug abuse titled Pack That Smack in 1986 and also composed and performed the title song of the film Jalwa? And the correct answer is Remo Fernandez. Okay, next question is who is known as the Grand Old Man of India? So guys, Dadabhai Naroji is the correct answer. Next question, which book written in prison in the 1920s and still in print was originally meant to be titled in translation as 4.5 Years of Struggle Against Lies, Stupidity and Cowardice? So, Mein Kampf, My Struggle by Adolf Hitler is the correct answer. Next question. In Roman times, people intending to join political office would wear a white toga to symbolize their purity of motive. Which word commonly used during elections literally means one who wears white? So guys, इसमें हम candidates बोलते हैं and it comes from candidates. Next question, who was the first Indian woman to win a Grand Slam title in tennis? So, guys, Sania Mirza is the correct answer. Next question, according to the Hebrew Bible, which Nazirite lost his strength after a lady was bribed by the Philistines to cut off his hair while he was sleeping? So, Samson, who was betrayed by Delilah, is the correct answer. Next question. Which animal was originally called a camelopard as it looked like a camel and had the coloration of a leopard? So the answer is giraffe. Next question. Who was the first Indian to win a Nobel Prize? So Rabindranath Tagore is the correct answer. Next question. Whose first film as a director was Dhobi Ghat, featuring Prateek Babbar and Monica Dogra, and it got released in 2010? So the correct answer is Kiran Rao, who was the director of the movie Dhobi Ghat, and she is also the director of a very famous movie that got released recently, Lapata Ladies. So Kiran Rao is the correct answer. Next question, in 1919, Lord Chelmsford renamed the city of Sakshi, after which pioneering industrialist and nation builder. So इसका correct answer हो जाएगा Jamshedji Nusserwanzi Tata, and he named it Jamshedpur from his name Jamshedji. Okay, next question. Who composed the Indian national song Vande Mataram? Make it a correction here. Indian. Okay, so Indian national song जो Vande Mataram है, it was composed by Bankim Chandra Chattopadhyay. Next question. Which common aromatic herb used for culinary and medical purposes, which is also lends its name to a shade of green? And yes, the correct answer is mint. Next question. Since its inception in 1985, which is the only entity which is not a state to have won the maximum medals in the national games? So, services, the joint teams of the Army, Navy, and Air Force is the correct answer. Next question. Which Indian state is known as the God's own country? So, God's own country is Kerala. Arabica and Robusta, these are the two most common variety of which product which are consumed globally, and these two are the common variety of coffee.
Next question. Chitrahar, which is the second longest running television show in India, running on Doordarshan since 1982, which is the longest running since 1967. So, if we talk about longest running television show on TV since 1967, it has to be Krishi Darshan. Next is, what is the name of the highest mountain peak in India? So, guys, it's Kanchenjunga. Next, in ancient Egypt, which animal known as Mau and associated with goddesses Isis and Bastet was so important that when they passed, families took them to the sacred city of Bubastis to be embalmed and buried. So these are the cats. Next question. Frame, loop, strap, punch, hole, and prong. These are all parts of which commonly used object. So, guys, it is belt in which these terms are used, out of which frame and prongs are brought together to make a buckle. Okay, next question. Who is the first Indian woman to win an Olympic medal? So, it's Karnam Malleshwari. Next question. In which popular fairy tale by Charles Perrault does the heroine's name represent that she spent her days working and nights curled up by the fire, often waking up covered in ash and soot? So the correct answer is Cinderella from the cinders of the fire. Next question. Which plane designed by the English firm Folland was never used as a frontline fighter in the Royal Air Force but played an important part in the Indian Air Force in 1965 and 1971 conflicts? So GNAT is the correct answer, which is also manufactured later as the Ajit. Okay, next question. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? So Santosh Yadav is the correct answer. Next question. The Arab shawarma, the Greek gyros, and the Mexican al pastor that use a vertical rotisserie derive from which kebab originally invented during the Ottoman Empire in the 19th century? And the correct answer is doner kebab. Next question. In many languages, the word for the color pink is based on the name of a flower, like rose in English, rosa in German and Spanish, and gulabi in Hindi. In Japan, it gets its name from which flower? So, peach blossom, which is known as Momo Airo in Japan. Next question. What is the name of the largest Indian state by population? So, guys, if we talk about by population, so in terms of population, it is Uttar Pradesh that is the largest Indian state. Next question. The television series Better Call Saul is a spin off of which award winning show first aired between 2008 and 2013? And the name is Breaking Bad. Next question. In 2021, Ejaz Patel the eighth Tho became the third bowler in the history of Test cricket to accomplish a specific feat. Who were the first two? So he became the third one, and you have to name the first two. So Jim Laker and Anil Kumble, these were the first two, taking all 10 wickets in a Test innings. Next question, which state is known as the Spice Garden of India? So Kerala has to be the one. Next question, which one-word slogan first used by IBM founder Thomas Watson in December 1911 inspired the name of one of its most famous products and is still associated with the company? And that one-word slogan is think. Next question, which river in East India shares a name given to Krishna by his foster mother Yashoda as she kept tying him to an urn to stop him from making mischief? So it is Damodar. From Dama
means robe and Udara means belly. Next question: who wrote the Indian national anthem Jana Gana Man? So Jana Gana Man was basically written by Rabindranath Tagore. That's it, guys. That's it for today's video on the topic general knowledge questions for competitive exams. I hope you found this video informative and helpful. And if you did, please give this video a big fat thumbs up and subscribe to the channel and hit the notification bell icon also for more such educational content. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. Good luck with your preparation. See you in the next video.